comment the line. Comment the line. So 2 times slash we use to comment the line. Why we need to comment the line? You can write explanation of that particular line, whatever you have written. Suppose you have written any example. For example, you have written printf something and this. And suppose you want to explain this line, that what actually you have done in this program. So you can write slash, and here you can write your explanation. By this printf statement is return to take the value from the user, or this statement is for the first number, this statement is for the second number, like that. Let's take another example. If I write CLR SCR, handwriting पे मत जाना because मेरे लिए it is difficult to write on this screen. Suppose this is CLR SCR and you want to explain this line. You can write to clear the screen. So what is the actual meaning of this double slash? The meaning of this double slash is whenever you write anything in the program, and if you want to write something in your own language, in your English, in your Gujarati, Hindi, in any language, just to explain that code, you can use this 2 times slash. We call it comment. To comment any line, we use double slash. Next thing, just a minute, guys. Sorry. Okay, so yeah, so this 2 slash we normally use to comment the line. Now it can be a question that, ma'am, why we need to do this, or can't we write directly? No, we can't directly anything in the C programming. The reason is whatever you write in the program, your compiler execute all the lines, right? Your compiler checks कि भाई इसने कोई grammatical syntax error तो नहीं है, कोई grammatical mistake तो नहीं की है, कुछ ऐसा जैसे कि semicolon is compulsory, तो ऐसा तो नहीं है इसने semicolon नहीं किया. So when you compile your program, your compiler checks each and every line of your code, each and every line of your program to check the syntax error. भाई कोई रूल है तो रूल आपने फॉलो नहीं किया है, ऐसा तो नहीं है. सो सपोज आई राइट एनीथिंग आफ्टर दिस 2 स्लैश, वो कंपाइलर ओमिट कर देगा, इग्नोर कर देगा. इग्नोर मतलब इट विल नॉट कंपाइल दोज लाइंस बिकॉज इट नोज कि इट इज नॉट रिलेटेड विथ द कोडिंग और द प्रोग्रामिंग थिंग. समझ में आया सबको? यस मैम. यस मैम. ओके. एक और चीज़ गाइस, अगर ऐसा होगा कि यार इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, देन स्टिल इट्स फाइन, बिकॉज ये चीज़ कैसी होगी, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते. द today's agenda is to make you aware about the small things or the coding procedure, that how to write the code. That is the motto of today's lecture or today's session. So double times slash, 2 times slash we use to comment the line. Okay, now my question, can compiler compile the lines which you have written after 2 slash? No, ma'am. No, right? तो compiler उसको compile नहीं करेगा, means you can write anything. So if I say, for example, this is my program. So if I use double slash for this line, तो ये वाला particular line compiler compile नहीं करेगा. But ये तो एक line की बात हुई. What if I want to comment multiple lines together, right? In that case, what I need to do? I need to do this for all the lines, right? Give me multiple lines. So instead of doing this,
means if you have a multiple lines to comment, you can do slash star. How many lines you want to comment? I want to comment first 5 lines. Then end it with star and slash. So whatever you have written, so this much of portion will not be executed by the compiler. In this slash asterisk and asterisk slash we use for the multiple lines, to comment multiple lines. So to comment a single line, double slash. To comment multiple lines, slash star star slash. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes. चलो अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में. So this is your program. This is my program, right? This program we have already done. हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे and will apply on this program as well. So see, when I am running, first let's compile it. Okay, when I run this program, it executes all the lines, right? It executes all the lines. But let's say I don't want to print this. Okay, एक काम करते हैं यहाँ पे. Let me write one more statement. Numbers. This is just the statement. Anyone can guess what will happen on the console screen after adding this line? We will have a heading like addition of 2 numbers. Okay, we'll have one more line on our console screen. This way, addition of 2 numbers, right? अब ये line, the line which I have written, addition of 2 numbers, of course compiler ने उसको बोला, compiler ने देखा कि हाँ पे, suppose I am deleting this semicolon, तो ये मेरा error हुआ. Which type of error we call it? Which type of error? Syntax error. Very good. And what do you understand by the word syntax? Syntax means rules. Syntax means rules to write that language. जैसे कि English में I am an Indian. Can I write N I am Indian or Indian MIN? ऐसा लिख सकते हैं नहीं. There is a certain rule which we need to follow, and after each statement we put the full stop. The similar way, there are certain rules to write the C programming language, and when you end the statement you need to put semicolon. But if I remove this, okay, after removing, save it, will I get the error? Then I'll compile this. Yes, ma'am. चलो इसको कंपाइल करते हैं. I got one error. मतलब क्या हुआ, कंपाइलर ने देखा कि यार, भले ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि स्टेटमेंट दूसरी लाइन पे आ रहा है, सेमीकोलन का एरर हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आता है. यार ये एरर तो आया, मतलब इस लाइन पे एरर इस लाइन पे है, बट उसको स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन एरर. सो इट मींस उसने ये वाला लाइन कंपाइल किया. ओके, विदाउट सेमीकोलन, if I comment this line without semicolon, I am comment this line. It means what? That compiler will not check this line. Please, किसी का mic on है? Please mute your mic. There is lots of background noise. Okay. So if I add slash or a comments to the, if I comment this line, so compiler is not going to check. कुछ भी लिखो फिर इसके अंदर. यहाँ पे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं. Anything we can write. So I'll compile. It will not give error. The reason is whatever you will write in the comment, compiler is not going to check it. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right.
अब मान लो कि मुझे यहाँ पे इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लाइन. सो बाय एडिशन ऑफ टू नंबर्स, फिर इस लाइन को मुझे एक्सप्लेन करना है like what is happening in this line. In this line we are printing the answer, right? I just want to explain that what is actually happening in all these lines. The first line, let's say this first line. Okay, what is happening here? To here the yeah. On this line, whatever I have written with a slash, it is not going to execute it. Save, compile and run. मेरा प्रोग्राम वैसे का वैसा चलेगा. And if I have multiple lines, let's say I want to explain this statement here, if I want to write something here, if I multiple lines, see पूरा comment हो गया, right? And in between these lines I can write anything. This is my first program. I'm going to run things and blah 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 blah, whatever I can write. So system is not going to, or sorry, compiler is not going to check it. Compile, fine, हम अच्छे से काम कर रहा है. Okay, so everyone understood the concept of commenting the lines? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me remove all these things. We don't need this. Right now we don't need this. Okay, so this is about your first line. Now let's come to the next line, that is hash include stdio.h. Okay, so when you write hash include angular bracket stdio.h, and we have two lines, same, hash include new.h. Okay, let's understand this. The very first we have hash. Hash is called preprocessor directive. I hope everyone is making notes. Yes, I ma'am. hope, Ma'am. because I'm not going to give the material for this thing, because ऐसा कहीं पे है नहीं. So whatever I am explaining you have to make your own notes. Okay, so hash is known as preprocessor directive. Preprocessor directive, इसके लिए पूरा एक टॉपिक है at the end of the course, वो हम बाद में देखेंगे. But right now you just have to keep in mind the word preprocessor directive. Hash is known as a preprocessor directive. इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं. Here we have three words, directive, processor and pre. डायरेक्टिव, इसको भी थोड़ा क्लटर करते हैं. डायरेक्ट, सिर्फ इतना फोकस करते हैं. What is the meaning of direct, or to direct something? Have you heard the director word? Yes, ma'am. What is the role of director in a movie? To command. To command, to direct, To give direction. To guide the. yeah. So similar way you can correlate. और pre मतलब पहले और processor. So what happens when you give any task to the computer? Now we know input, process and output, right? So process. So here
what is happening when you run this program, your processor gets the input मतलब आपका पूरा प्रोग्राम प्रोसेसर के पास जाता है, राइट? और उसके बाद भले ही हम 2 नंबर इनपुट करवाया, whatever we do, but ultimately processor gets something as an input, means your whole program, and at the end you get your console screen. Preprocessor, before processor process your program, I repeat, before processor process your program, we need to direct the processor कि भाई तेरे लिए एक C का प्रोग्राम आया है, तो उसके लिए कंपाइलर, अकॉर्डिंग टू दैट कंपाइलर यू नीड टू चूज, और यू नीड अ कंपाइलर कि जहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है, उसमें कंपाइलेशन भी है, means where you need to check the syntax errors as well. I repeat, before you give your program to the processor, processor needs to understand कि भाई कौन सा टाइप का इनपुट है, तो ये जो इनपुट आया है या ये जो भी है, it is a program written in the C programming language. So based on that you need to check the syntax and everything. You need to call the compiler कि भाई आ और आके compile कर पूरा program and everything. So here we can say or we can understand that hash sign जो है यहाँ पे उसका main काम क्या है, processor before processing, and that's why we call it a preprocessor directive. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उतना ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन. तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्यू स्टूडेंट्स आर लाइक कि जब तक उनको एक वर्ड समझ में नहीं आता, दे कैन नॉट digest the statement, and so I always try to explain each and every word. So hash is nothing but the preprocessor directive which we write before the program. Now कब यूज करेंगे हैश साइन? Always before you start writing your actual program, we need to add libraries. मैं मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं बार-बार बोल रही हूँ. We need to add the libraries. Why we need to add the libraries? क्या होता है ध्यान से देखना यहाँ पे. What happens? C प्रोग्राम जो है ना, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा. ओके, उसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं, इंग्लिश के टर्म में समझते हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेट्स से हियर आई हैव रिटन वन पैराग्राफ एंड आई वांट टू चेक द ग्रामर. आई वांट टू चेक कि मेरा जो इंग्लिश है वो सही है या नहीं है. सो व्हाट आई नीड टू चेक, सो मेनी थिंग्स आई नीड टू चेक. ग्रामर आएगा, राइट, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कितनी सारी चीज़ें विच आई नीड टू चेक कि भाई सही है या नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा पता है, वी विल हैव मल्टीपल फाइल्स जहाँ पे रूल्स लिखे होंगे. ये जो फाइल है, दिस इज द फाइल वेयर वी हैव रिटर्न रूल्स फॉर द वर्ब. देन वी हैव अनदर फाइल जिसमें वी हैव रिटर्न द रूल्स फॉर नाउन. देन वी हैव अनदर फाइल जहाँ पर हमने एडजेक्टिव के लिए सारे रूल्स लिखे हैं. Then we have another file where we have written the rules for the actual grammar, like punctuation marks. So क्या होगा, this is your actual file dot OC है, हम इसको ENG नाम देते हैं. This is your ENG. But to check each and every line, I need to connect all these files with this. कि भाई मुझे तेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, तेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, तेरी भी और तेरी भी ज़रूरत पड़ेगी. So what we are doing here, we are simply including required files. Here we are including required files with our original files कि भाई तेरी ज़रूरत है तो तू आ जा.
In the same way, if you have your C program file, this is your program, this is your .c file, तो C में भी ऐसा होता है, we have multiple files, like कुछ अलग अलग फाइल्स है, अलग अलग रूल्स है. एक फाइल होती है, एक होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, बहुत सारी फाइल्स है ऐसी. फिर एक होती है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, एक होती है स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग, एक होती है मैथ्स के लिए, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी फाइल्स है. वी कॉल देम libraries or hidden files. We call them libraries or hidden files, right? So suppose I am using in this program I have used certain rules which are only associated with this file. तो I'll say भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तो मुझे ये दो फाइल इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी. Suppose I am using something related with the maths rule. Okay भाई तू भी आजा. Suppose I am using some rules related with the strings. भाई तू भी आजा. Right? So this way, always whenever you start writing your program, you need to add the libraries. And so we have these statements. Hash include stdio.h. ये जो angular brackets है, these are the this is the syntax कि भाई you have to follow this, right? In similar way, two files we have added, two libraries we have added, stdio.h and conio.h. Suppose in future you want to add the string file, so how will you write? Hash include less than string dot h greater. So this way you can add as many of files as you want. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is why we add the libraries, right? So based on the requirement we will add the files. But अभी के लिए जब तक मैं ना बोलूँ तब तक by default you have to add these two files. हमेशा हर एक प्रोग्राम में. Why we need to add that I am going to show now. So let's switch to the program. Someone raised the hand. Yes, Saina. Ma'am, y.h. I'm coming on that. Okay. Who is 442? Swapnil. मैं मतलब ये सेंड करो कुछ मैं लिख ही नहीं पा रहा उसके अंदर अपना. क्या? 2 मिनट में मेरे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मतलब जो Wait. ऐसा आ रहा है. Swapnil, wait. Right now I'm explaining something. अभी वो चीज़ नहीं करेंगे. Let me finish my job first. Query हम बाद में solve करते हैं. Let me finish this. Okay. So see guys. Now the first line is clear to everyone. So see what happens if you don't add these files. क्या होगा? Because हमें पता तो होना चाहिए कि भाई हम क्यों add कर रहे हैं. समझ में तो आ गया, right? भाई क्यों add कर रहे हैं? So let's understand. Now question. What should I do if I don't want to compile these lines? मुझे stdio.h वाली line नहीं चाहिए. What should I do? // Perfect. अब हम बोलेंगे comment करो. What we will say? Comment it. Perfect. देखो तुम अब देखना ध्यान से. मैंने stdio.h वाला line comment कर दिया. It will give me lots of errors. क्यों? Because we have used certain rules from this stdio.h library and we are not adding this library. So उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है. चलो देखते हैं. See
ओके दिस इज लेटेस्ट वर्जन। एक मिनट, ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए ये बाय डिफॉल्ट लेगा। काफ़ी कंपाइलर्स में ऐसी एरर आएगी। stdio.h that is called the I forgot to download the lowest version, not an issue. C standard input output. The full form of stdio.h is standard input output, and H stands for hidden, or sometimes we call it header. So the file which you are adding on the top, they are header files, they are libraries, they are hidden files. Any word you can use. So here H stands for the hidden, and sometimes we call them the header files. And this is your header section. So standard input output कहाँ से आता है? Standard input output कहाँ से आता है नहीं, कौन कौन सी चीजें standard input output से आती है? So your printf statement and scanf statement, two functions belongs from this printf, scanf. These two functions belong from the stdio.h. So what happens? Suppose you have not added this library. If it's your lower version, मेरा latest है इसलिए अब it is improved actually, so it is not giving an error. But suppose if you don't add the stdio.h in your program, and if you have used printf and scanf, it will give an error. तो हमें ऐसा पता होना चाहिए that which functions belong from which library. So printf and scanf कहाँ से आता है? stdio.h से आते हैं printf and scanf function. Let me comment this. Right. Okay. So now let's move ahead for the conio.h. If I comment this line, what will happen? Let's check. Guys, I hope I'm not fast. Everyone? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है ना स्पीड? बिकॉज एट स्कूल के बच्चे हो तो आई होप यू कैन कोप अप. It's fine, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है चलो. Let's compile it. Okay, हमने क्या किया? We just commented the line conio.h. Let's compile it. Again, no error. Only because of the latest version. conio.h से कौन सी लाइब्रेरी, कौन से फंक्शंस आते हैं? Okay, very first, conio stands for console input output and same hidden or header. Console conio.h से you get clr scr and get ch. These two functions come from the conio.h. So it might be a question in the exam that give name of any two functions belong to the conio.h library. So you should be able to answer. So standard input output stdio.h में से कौन से functions आते हैं? printf and scanf. printf and scanf. And from the conio.h? Clear screen and get Clear ch. screen and get. Okay, if it is asked the name of the function, always say clr scr, not clear screen, because clear screen is a full form. So always use clr scr and get ch. Right? So काफी जगह पे एरर आएगी, so you should know कि भाई okay ये एरर है तो कहाँ से आ रही है. Someone raised the hand. You can ask the question. Ma'am, what is the meaning? What is the use of gets? Get ch. Yes, ma'am. What's your name? खुशी. खुशी, हम लोग उस लाइन पे नहीं आए हैं बेटा अभी तक. अभी तो हम सेकेंड थर्ड लाइन पे ही है. Get ch बहुत लास्ट में है ना. I'll explain it. We will understand each and every line one by one. Okay, ma'am.
Okay, so यहाँ तक सबको clear? Any doubt, any query so far? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Oh, No, ma'am. okay. So now I'm just removing. If you have written this notes, I'm just removing these things. Okay. So now come to the next line that we have a void main. 1, 2, 3, fourth line. Void main. ओके एक और चीज आप लोगों को लगेगा कि 1 2 3 नंबरिंग क्यों करवाया. सो व्हेन यू राइट द एक्सप्लेनेशन तो पता चले कि ये फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन. दैट्स व्हाई. और हर प्रोग्राम में नहीं करना है ऐसा. ओनली फॉर दिस प्रोग्राम ओनली. ओके सो वॉइड मेन. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉइड मेन थिंग. और इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे बिकॉज इट्स वन होल टॉपिक जो हम बाद में सीखेंगे. बट राइट नाउ what you have to understand, void means nothing. void का मतलब होता है nothing. void means nothing. And main, what is main? Main is a main function of any C program. Most important line. What is main? I'm talking about this main. What is main? Main is a main function of any C program. Means you cannot write the program without this main function. Function क्या है? Why main? वो सब बाद में. Right now you just have to keep in mind two things. Void means nothing. And main means main is a main function of any C program. Means if you want to write the program, first you need to write the void main, then start with the curly brackets, and in between you can write your program. Right? So इसको ज़्यादा नहीं समझेंगे हम because it is not possible to understand at this stage. So just write down what is void. What is the meaning of void? Void means Nothing. what is the meaning of void, guys? Nothing. 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 And what is main? Main function of any C Main program. function of any C program. Main is the main function of any C program. Okay. Now let's move to the next line. और एक और चीज, when you write the main this lines, okay, shall I remove these two lines, guys, if you are done with the writing? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Important thing, brackets are compulsory. Whenever I use ये function है throughout the program, whenever I say function, मतलब you will find all the functions with this brackets. मतलब अगर ब्रैकेट है मतलब ये फंक्शन है, और फंक्शन के बाद मतलब कुछ भी लिखा है एंड ब्रैकेट से मतलब ये फंक्शन है. सो इफ आई से printf, तो ये क्या हुआ? Function. When I say scanf, तो ये क्या हुआ? Function. Function. और कितने ऐसे फंक्शन दिख रहे हैं प्रोग्राम में? और मेन तो है ही. Right, so in this program we have total 5 functions. We have used total 5 functions. Right, so how will you identify that this is the function? By the brackets. Whenever you see the brackets, it is a function. Function क्या है, क्यों यूज करना है, वो सब बहुत बाद में देखेंगे, not at this stage. और when you write the void main, do not put the semicolon. कभी नहीं आएगा सेमीकोलन. काफी बच्चे मेंशन करते हैं सेमीकोलन, फिर एरर आता है, प्रोग्राम रन नहीं होता. सो डू नॉट यूज द सेमीकोलन. ओके, नाउ now your actual programming is going to start. Use the curly brackets. Use the curly brackets to write your code. This is your opening curly bracket and this is your closing curly bracket. Always keep in mind
that whenever you open any bracket in the program, do not forget to close it. आगे जाके कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि for example, this is your, you have opened this bracket. Okay, suppose you have opened this bracket, तो you need to close it. In between the program भी कभी कभी ऐसा होगा कि भाई एक ब्रैकेट ज़रूरत थी, फिर do not forget to close it. If I opened it, always close it. ऐसा भी होगा, this, 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 ऐसे sequences बनेंगे आगे जाके. But one thing keep in mind, when you see that there is one open bracket, always close it. और हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, alignment. ठीक है कि भाई ओके, जिस जहाँ पे ओपन किया है वहीं पे क्लोज करो, सो इट विल बिकम्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि अगर प्रोग्राम में एरर आ रहा है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अच्छा भाई ये वाला नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा है. सो ऑलवेज यूज द टैब इंडेक्स फॉर दिस. ओके, डन एवरीवन, समझ में आया? मैम. Yes, ma'am. यस मैम. So after this most important part and a separate topic we are going to start now. Okay, जब लगे कि मैम बहुत हो गया है तो बोल देना, we will take a break of 2 to 3 minutes. Shall we continue or you need a break? Continue, ma'am. Continue. Continue, ma'am. ठीक है, बोल देना जब भी ऐसा लगे कि मैम ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, 2-3 मिनट का. एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक समझ के हम विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स. वेरिएबल टॉपिक. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, okay, next line is actually integer no1, no2 and what we have taken ans और सम. Yes, क्या ma'am. लिखा है? कुछ भी. NS. ओके, ठीक है, चलो. सो नाउ द टॉपिक इज variables. Topic is variables. Did I explain this variable concept? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am, you did. Ma'am, Names you given to guys the want- memory locations to store the data. Actually what happens, there are शुरुआत में ऐसा होता है because 5 subjects I teach, right? और सब में शुरुआत में यही चीज़ें होती हैं, input, process, output and variables. So sometimes I forget कि भाई कौन से क्लास में ये करवाया था. Anyways, ठीक है, but still we'll do it. So variables. What is variable? Variable is a name. Variable is a name. Is a name given to the memory location to store and retrieve the data. What is variable? Variable is a name given to the memory location to store and retrieve the data. अब इसका concept भी समझते हैं. In the memory, what happens? You have multiple blocks. बहुत सारे ऐसे blocks होंगे. Whenever you take any value from the user, जैसे कि अभी हमने कौन सा प्रोग्राम किया कि addition of 2 numbers, right? And to perform the addition of 2 numbers, we need 2 numbers from the user. मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. Hello. Now. मैम लो हो गया है. Ma'am, low sound आ रहा है. अच्छा, I guess battery and the Bluetooth. Just give me a minute, guys. I change my headset. Give me a minute.
हेलो नाउ Proper ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. इसका बैटरी लो हो गया था इसलिए. ओके सो या so what happens when we say when we work with the data matlab whatever we are taking the input from the user, whatever the data we take from the user, we need some space, we need to store that data, right? It is like if I say ki bhai give me that bottle, suppose if I ask you ki bhai give me that bottle, you need hand to hold that bottle, right? You need your hand is nothing but the space where you can put your stuff, right? To take it from one place to the another. The same way we have a memory location. When I say कि भाई कोई डेटा मुझे प्रोसेसर को देना है प्रोसेस करने के लिए, बट इट नीड्स समथिंग, इट नीड्स स्पेस कि जहाँ पे वो काम कर सके, एंड सो फॉर दैट वी हैव memory locations. For that we have memory locations. Let's assume that all these blocks are the memory blocks. All these blocks are memory blocks. और इसमें मुझे अलग अलग डेटा स्टोर करना है. When you say जैसे कि see when you run this program, तो see enter number 1. when I'm entering 5, तो ये जो 5 है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाएगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ, टेम्पररी तो टेम्पररी, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टोर हुआ. व्हेन आई एंटर 3, सो ये 3 भी कहीं ना कहीं पे मेमोरी में स्टोर हुआ. एंड व्हेन आई हिट एंटर एंड आई गॉट 8, तो क्या हुआ, मेमोरी में मेरा कहीं ना कहीं 5 था, 3 था, कहीं पे वो काम किया, इस प्रोसेसर ने उसके ऊपर एडिशन परफॉर्म किया एंड उसने 8 जनरेट किया. सो सेम वे सेम चीज़ यहाँ पे कैसे होगी कि भाई व्हेन आई एंटर्ड 5, वो मेमोरी में उसको कहीं पे भी जगह मिली, लेट्स से यहाँ पे जगह मिली तो वो 5 चला गया. व्हेन आई एंटर्ड 3, उसको यहाँ पे जगह मिली खाली तो यहाँ पे आ गया. फिर उसने उसको प्रोसेस किया, राइट, कि 5 + 3 उसने परफॉर्म किया एंड देन आई गॉट द 8, तो 8 उसने कहीं यहाँ पे स्टोर किया. सो for anything, even for the input, for the output, it requires space, and so we have memory. But all these locations, jitne bhi you can see all the blocks, each and every memory location have the address. कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे लाइक 5 and 20 blocks are there, right? But memory में तो 20,000, 20 lakhs blocks can be there. So how can I remember the address of that location, right? सबका अलग अलग एड्रेस होता है, जैसे कि और एड्रेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. जैसे कि इसका एड्रेस आई एम जस्ट अज्यूमिंग 00BH78 ऐसा एड्रेस है. ये जो 3 लोकेशन है इसका एड्रेस लेट्स से SH0912 ऐसा कुछ है. सो ऐसे रैंडम एड्रेसेस होते हैं विच वी कैन नॉट रिमेंबर. आई विल शो यू how you can see this address, that I will show you, but we cannot remember this address. And so for that what we do, we give name to that memory location, right? We give name to that memory location to store. 5 and 3 मैंने स्टोर किया, राइट, लेकिन 8 को मैंने क्या किया, रिट्रीव किया, राइट. 5 और 3 इनपुट किया, फिर प्रोसेसर ने कुछ प्रोसेस किया और 8 लिखा, तो मैंने 8 को रिट्रीव किया. सो what we do, because we cannot remember this complicated names, we give name to the memory locations to store and to retrieve the data. यहाँ पे डेटा क्या है हमारा, 5, 3, 8, all these are data, and the name which we give we call variables. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस को कुछ ना कुछ नाम दे दिया. जैसे कि आई गिव नेम टू दिस लोकेशन NO1, तो मुझे समझ में अच्छा नंबर 1 है. फिर इस लोकेशन को मैंने नाम दे दिया NO2.
और इस लोकेशन को मैंने नाम दे दिया ANS. सो नाउ इट इज इजी फॉर मी टू रिमेम्बर कि भाई मेरा 5 कहाँ स्टोर हुआ है, NO1 में. 3 कहाँ स्टोर करना है, NO2 में. आंसर कहाँ स्टोर होगा, ANS में. It means all this NO1, NO2 and ANS are my variables. Why we call it variable? Because as variable मतलब something which is not continue, right? Which is not constant, not continue, which is not constant. Vary, जो change होता रहता है. That's why we call it variable. Why? Because एक बार जब मैंने run किया, I entered 5 and 3. Second time I may entered 3 and 2. Next time I may enter other values. So क्या हो रहा है, the value of this particular variables or the locations are varies, and that's why the name given to this location, we call them the variables. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So let's take 2 minutes break. If you want to write something, draw this rough diagram in your notebook. It will help you out, believe me. Easy rahega at the time of the exam. It will easy for you to understand the concept of variable memory location. So just draw this diagram in your notebook, write down this definition and give the example. I take 2 minutes break. We'll start after 2 minutes, right? Recording bhi as it is rahega, meeting bhi as it is rahegi. You don't need to leave the meeting, right? Yes, ma'am. Okay, so let's take a break.
Okay, shall we continue now, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, this is the concept of the variable. So now we know that in our fifth statement, fifth or sixth, I don't know which number, whatever the number, NO1, NO2, ANS are my variables. ये तो हमें समझ में आ गया. But it's a case of the numbers, sum of the numbers, right? But what if I work with the, let's say, A to Z character? If I say A to Z character, so the data, as I said, that see data, to store and retrieve the data, and this data can be numeric, it can be character, it can be alphanumeric, right? When I say numeric, it can be a decimal, it can be integer, it can be decimal. When I say character, it can be a single character, it can be multiple character or a group of characters. When I say alphanumeric, same, single symbol or the multiple symbols or a group of different letters. So when I say data, so data can be of multiple types. It can be numeric, it can be character, it can be alphanumeric, right? So based on this, we decide data, and based on that we decide data type. So after variable topic, now we will talk about the topic data types. So this statement contains multiple topics. One, we are done with the one topic variable. Now the second topic is the data type. So let's talk about the next topic, data type. Different types of data you can enter based on the requirement. For example, if I say your name, so your name can be like this. For example, Jai is the name. When I say age, so okay, your age is like 18. When I say your marks or your result, if I say your result can be 86.33. When I say your gender, so it can be M or F, so this is M. When I say your email, so your email contains lots of alphanumeric characters like joy123@gmail.com, right? So as you notice different types of data, so as you see that different types of data you can enter, right? ऐसा तो है नहीं कि addition of 2 numbers से बात खत्म नहीं, हम बहुत सारा काम करने वाले हैं. So of course every time we will enter the different type of data, and data can be of all these types, right? So based on your type of data you are going to enter, we have different data type formatters, right? जैसे कि here we have name, so it is a group of characters. Am I audible, guys? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सब लोग जाग रहे हो ना, सो मत जाना, पता चला कि सब लोग सो गए.
बीच बीच में मुझे बोलना पड़ेगा, जागते रहो ऐसा। Anyways, so if you see that the name JAY contains multiple characters, right? Multiple character, so it's a character type thing. When you say 18 age 18, so 18 is an integer type thing. Integer type thing. When you say a result which contains a decimal number, it is a float type. When I say gender, single character, but still it's a character type. When you say email, which contains all the things, like we have characters, we have numbers, we have special characters, we have symbols, we have punctuation marks, everything. So again, this is a character type. So mainly in C program, we have 3 data types: char, that is char we write, int for integer, and float for the decimal values. There is a difference between this char and this char. वो हम लोग बाद में करेंगे, जब ऐसा प्रोग्राम करेंगे, at that time I will explain. Right now just focus on that data types. In the C program, 3 types of data normally we add or use: int, float, and char. So how many different data types we have? Integer, float, and character. अलग अलग होगा आगे इसमें, long integer, double integer, float, and but right now only 3, because this is our first program. Only 3: int, float, and character. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now you know that why we have written int over here. Why we have written int? Because we are using integers. Exactly. Yes. because we are performing the addition operation on integer numbers. मान लो कि मुझे I want to perform this 38.3 multiplied by 6.9. In that case, my data type would be Float. float. Very good. And this name, variable names, you can write any. There are certain rules for the variables. I'm coming on that point. But you can write anything, as you can give any name to the variables. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Integer. अब हमारे पास ये memory blocks है, right? We have this memory blocks. We have this memory blocks. अब मेमोरी में कैसा होता है पता है कि ये जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट ईच मेमोरी ब्लॉक इज ऑफ अ 1 बाइट. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 1 बाइट का एक ब्लॉक है मेरे पास. सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा इट ऑक्यूपाइज डिफरेंट स्पेस. जैसे कि एक बहुत पतला बच्चा है तो वो छोटी सी जगह में आ जाएगा, लेकिन एक बहुत मोटा बच्चा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, राइट? अगर कोई अच्छे से सोता है तो वो सोफे पे भी सो सकता है एक ही साइड पे, लेकिन किसी को ऐसे नहीं रोल करने की आदत है, उसके लिए बेड भी कम पड़ेगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर कैरेक्टरिस्टिक यू नीड अ स्पेस, राइट? इन द सेम वे व्हेन आई से integer occupies 2 bytes. Integer occupies 2 bytes in the memory. Float occupies 4 bytes in the memory. In character occupies 1 byte in the memory. मतलब एक इंटीजर वैल्यू के लिए 2 बाइट्स, एक फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट्स, और एक कैरेक्टर वैल्यू के लिए 1 बाइट. सो क्वेश्चन, if I say I have variables int, no1, no2 and ans, तो इन लोगों को दो बाइट्स चाहिए, और यहाँ पे मेरे जो ब्लॉक्स है, ईच ब्लॉक्स इज ऑफ अ 1 बाइट. तो no1 के लिए मेरा ये वाला लोकेशन हो गया, no2 के लिए मेरा ये वाला लोकेशन हो गया, और ans के लिए लेट्स से कहीं यहाँ पे उसने जगह बना दी.
Question: how many total bytes I need for this statement? 6. 6 bytes. Multiply by 3, 6. कंसेप्ट समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Whatever I am writing on my whiteboard, please note down everything in your notebook, because I am not going to give the notes for these things. Even I don't have actually. So जितना भी बोर्ड पे लिखा जाएगा, you have to write in your notebook. Okay. So is this thing clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. After this data type thing, data type में what you have to remember, different types of data, numeric, character, alphanumeric, integer, decimal, single, multiple. वो तो हम जैसे जैसे करेंगे याद रहेगा. In C programming, normally we use int, float, character. Int occupies 2 bytes, float occupies 4 bytes, char occupies 1 byte, right? So I guess now it is very much clear to everyone the actual meaning of this statement, right? Why we have written this. Yes, ma'am. Ma'am, but 1 byte we are taking it as example or it is there? No, we are taking as an example. Right now we are taking it as example because मुझे नहीं पता मेमोरी ब्लॉक की साइज क्या होगी, but ये कंफर्म है कि integer occupies 2 bytes. Okay, ma'am. वो चाहे इंटरनली कैसे भी करे. एक और चीज भी गाइस, काफी कंपाइलर्स ये जो साइज है ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी. इट माइट बी पॉसिबल कि किसी का वर्जन अलग है कंपाइलर का, तो वो शायद 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करे या 1 बाइट भी ऑक्यूपाई कर सकता है. सो दिस 2, 4 and 1 completely depends on your OS and on your system and the version of your compiler. ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? बट हम लोग अभी फॉलो करेंगे 2, 4 and 1. फाइन? Yes, ma'am. ओके. एंड आज के लिए लास्ट रखेंगे ये वाला टॉपिक. अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So now we know about the variables, we know about the data types and all. Now let's talk about the variable rules, or also we call it a naming conventions. Anything, variable rules or the naming conventions. आज मेरा मन हुआ कि भाई मुझे of course वेरिएबल के नाम देने हैं, राइट? सो देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच यू नीड टू फॉलो. कैसे रूल्स हैं? जैसे कि NO1 is fine, but 1 NO is wrong. I can write NO_1. Yes, I can write underscore NO1. I can write NO1_. Yes, I can write, but I cannot write NO.1. I cannot write NO-1. I cannot write NO1 dot. Only underscore is allowed. Only underscore is allowed in the variable name. कोई भी और symbol नहीं चलेगा. Second thing, you cannot start. Second rule, this is the first rule, underscore. First rule. Second rule, you cannot start the variable name with the numbers. This is wrong. Either you can start with the character or with the underscore, but not with the numbers. Second rule, no numbers at start. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना. So you cannot start the variable name by the numbers. समझ में आया?
Yes, ma'am. So two basic rules. And in your in this context, if I say no1 मेरा एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है मेरा no1, both are different. The reason is C is a case sensitive language. याद रखना, C is a case sensitive language. When it is asked to write the small, you have to write it in small. If it is capital, you have to write it in a capital. It's a case sensitive language, and so capital N1 and small one both are different. And ऐसे बहुत सारे combinations हो सकते हैं. For example, other combinations can be like NO1, then NO1, then NO1, then NO_1. So all are different. भले मुझे NO1 लग रहा है, but all are different. All will perform a different role. So this is the next thing. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And last statement from my side, when you give the variable name, always give a meaningful name. अपना नाम मत दे देना, हाँ, देवांश 1, देवांश 2, देवांश 3, D1, D2, D3. No. If you are storing the number, always give the meaningful name, just like we have given in this program, like NO1, NO2, ANS. So only by looking at the variable name, you will be able to answer कि total variables कितने हैं, कौन से variable में क्या काम हो रहा है, and like that. तो यहाँ से मुझे easily पता चलेगा क्योंकि भाई NO1 है, NO2 है, मतलब दो numbers की बात चल रही है, और ANS है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर स्टोर करना है. Instead of answer, I could take sum as a variable name. तो मुझे और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता कि भाई सम नाम का वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर हम NO1 NO2 का सम करके डालने वाले हैं. So always give meaningful name. Everything clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए, वेरिएबल रूल्स, डेटा टाइप, एंड व्हाट इज वेरिएबल, हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डेटा टाइप, हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड, प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट. तो हम लोग अभी तक पहुंचे हैं ये वाली लाइन पे, यहाँ से बाकी है. इफ यू गाइज आर रेडी देन वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज हम इसको बाद में कर सकते हैं, वट एवर यू से, बिकॉज आई फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ सब करने पे पूरा लाइक दिमाग के ऊपर से चला जाए. मैम बाद में मतलब कब करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. हमारे पास सिर्फ आज का टाइम है, बिकॉज from Monday we have Diwali vacation, and tomorrow and day after tomorrow I have my मतलब student का ATKT का exams है, presentations है, so I'm pretty much occupied. Saturday Do you have Continue till 1. Okay, that's great. If we can Saturday possible नहीं होगा बेटा मेरे लिए. There are ATKT exams actually, so Thursday, Friday, Saturday possible नहीं बनेगा. We have only two. मैम मंडे हम लोग सेट नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब दिवाली वेकेशन में भी पढ़ना है ऐसा? नहीं, एक दिन की बात कर रहा हूँ. हाँ, एक दिन डेफिनेटली कर सकते हैं, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये कंटिन्यूएशन में है ना, तो आज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो एटलीस्ट पूरा एक फ्लो रहेगा. ठीक है मैम, कर दो फिर. नहीं मतलब इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक आफ्टर लंच करना है तो लंच के बाद, अगर अभी ज्यादा हो गया है और
एक साथ सब कुछ समझ में नहीं आता है. After lunch it will be better. Do you have lectures today? प्रैक्टिकल का लेक्चर है पर वो रिकॉर्डेड ही होगा. कितने बजे है? We can't take chance. कितने बजे है? 30 to 4:30. 2:30. 2:30 को है. So I guess we can finish it in 1 to 2. 1 या मैम. है ना, 1 घंटे में हो जाएगा बाकी का जितना भी है. सो वो हमारा थोड़ा फ्लो में भी रहेगा और आप लोगों को भी थोड़ा ब्रेक मिलेगा बिकॉज एक साथ इतनी सारी चीजें जाएगी तो आई डोंट वांट टू बिटनेस हो. क्रैश हो जाएगा माइंड. हाँ वही. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.